Good evening, everyone. I welcome you all to our one and only Pink Talk live session from Pinkish Foundation. I'm your today's host, Aditi Gupta. और आज हमारा टॉपिक है वो उसको धीरे से बोलना सिखाया है फिर मुझे एक बार दोबारा अलग कमरे में सुलाया है अलग थाली में खाना भी खिलाया है आज फिर मुझे मम्मी ने अचार को छूने से बचाया है मेरे घर में आज फिर मुझे कोने में छिपाया है और फिर मुझे मंदिर से दूर खड़ा कराया है और पेट दर्द का बोलने का बहाना बाबा को बताया है और दवाई ना खाने बाबा को एक बार फिर मुझे दर्द में बिठाया है बार बार के सवालों से छुटकारा पाने के लिए ही तो मुझे इस चर्चा पे बुलाया है लेकिन ये सब क्यों कराया है क्योंकि मुझे महीना आया है पीरियड ब्लड मेंस्ट्रुएशन मासिक महामारी ये सब छुपावा क्यों है अभी तक सबसे why it is all hidden and secret till yet why are we all ashamed of talking of it in front of every people ये तो बहुत नॉर्मल है ना जो हर लड़की को ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एज तक हर मंथ तक होता है तो अब इस टाइम तक भी हम इतना शर्माते क्यों हैं बात करने में इसको एज अ टैबू की तरह क्यों लेते हैं अभी भी इसको हम इतना डर्टी और इम्प्योर क्यों समझते हैं जबकि हमको पता है इट इज अ सोर्स ऑफ आवर लाइवलीहुड इट इज अ साइन ऑफ वुमेनहुड तो ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स हम जानेंगे आज हमारे सेशन में विद तान्या गुप्ता के साथ So, Ms. Tanya, I welcome you on the session. Namaste, It is honor to everyone. have Good you. evening. Namaste, Tanya. So, first of all, I would like to tell to my audience कि जैसे हम हर सेशन में प्राइजेस का गिव अवे करते हैं फॉर द बेस्ट क्वेश्चन एंड फॉर द बेस्ट कमेंटर तो इसमें भी हम इस तान्या गुप्ता से पूछेंगे एट द एंड ऑफ द सेशन कि आपको सबसे अच्छा क्वेश्चन कौन सा लगा और बेस्ट कमेंट के लिए तो हमारे हैं ही मिस्टर इंडिया मिस्टर फिल जो कि हमें बैकग्राउंड में बताएंगे कि बेस्ट कमेंट कौन सा है एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल डिक्लेयर द प्राइजेस एंड विनर्स सो कमिंग बैक टू द सेशन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिस तान्या Tanya is a co-founder and chief operating officer of Womenite NGO. She, along with other members of NGO, is working towards eradicating and combating the taboos and myths associated with menstruation. She, along with other members, has organized various campaigns for spreading the awareness regarding menstrual hygiene and for educating both men and women upon this issue. तो तान्या हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में और आपके एनजीओ के बारे में Thank you so much, Aditi. I'm very grateful to the Pinkshi Foundation for having me here. Thank you so much and good evening, everybody, for being with us today. Talking a bit about our organization, Womenite, we have been working on three issues: child sexual abuse, menstrual hygiene, and gender equality relentlessly from past 6 years, organizing workshops in various slum areas, in colleges, in schools, in low-income private schools, government schools across Delhi and NCR. So we keep collaborating with the government bodies such as district magistrates, IS officers, IPS officers, with the Delhi Legal Service State Authority, the legal body, the Delhi Police, or be it institutions such as Delhi Commission for Women, National Commission for Women, DCPCR, NCPCR. So working with them on these three issues, working on various campaigns throughout the year, such as celebrating Joy of Giving Week, just taking our small steps to create change, to bring change in the society, celebrating Breast Cancer Awareness Month, talking about various campaigns we launched, talking about one of the campaigns, which was hashtag End Period Poverty. We started last year. We all knew, what happened during pandemic. We all knew migrant workers के साथ क्या हुआ था. Schools were shut down. People didn't have food at home. तो हमने सोचा बहुत सारे लोग आए थे. People, collaborated. They came together to serve food to the society. But then, schools were locked down. People didn't have food at home. Then how can we imagine the women at home asking money to purchase sanitary napkins, to buy the period products?
So therefore, we started the relief work, to distribute more than 6 lakh sanitary napkins as a part of relief work last year, and the campaign is still ongoing because we all know the second stage was really devastating. Then we all knew what happened in the second wave of coronavirus. So we started distributing oxygen concentrators, the masks along with the sanitary napkins to battle COVID-19 in a better manner. And we all knew that even the doctors, they were having this mental health breakdown. So imagine the women, imagine those people who lost their livelihoods, who lost so many family members due to pandemic. So we launched our mental health line number along with that, and we organize these various sessions such as the Pink Talk today. Really grateful to be here. थैंक यू सो मच तान्या। आपसे जान के बहुत खुशी हुई तान्या कि आपने कितने अच्छे अच्छे कैंपेन्स एंड ऑल्सो आपने कितने तरीके से हेल्प करना चाहा। वी आर रियली ग्रेटफुल टू हैव यू ऑन दिस शो। एंड जैसे कि तान्या, मैंने आपकी प्रोफाइल देखी एंड आई केम अक्रॉस कि आपने बहुत सारे सेशन ले रखे हैं वुमेन्स के साथ में। तो मैं आज ये जानना चाहूंगी कि आप हमारे साथ में कैसे स्टोरी डिस्कस करना चाहेंगी। Right. So I'll go about the stories which I have faced, क्योंकि हमेशा personal stories से शुरू करना चाहिए, so that people, राइट। they are also inspired. So, and the stories that came across while I was delivering sessions, mostly in the form of experiences, I would tell you. Okay, yeah, I'm really looking forward to that, Tanya. Please go ahead. The audience is waiting. Yeah. Awesome. So actually, I would like to begin with my own story. Never shared it before, but I thought, why not this Pink Talk to be an opportunity to share this. So in my 4 years of organizing, delivering sessions, working with the women in slum areas and villages, I never shared this story, but I'll do so with the audience we have here. So when I was a very, very small little child, my mother, when she used to talk to my father कि डेट आने वाली है और मैं यहाँ पे नहीं जा सकती, और आप काम कर देना, लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट डेट, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती. आई ऑलवेज यूज टू थिंक एज अ चाइल्ड कि तब तो पता नहीं था कि ये डेट होती क्या है. तो मैं हमेशा से ये सोचती थी कि भगवान जी मम्मा को अपने पास तो नहीं बुला रहे, इसीलिए तो ये डेट नहीं दे रहे. एंड आई यूज टू क्राई अ लॉट, मैं बहुत रोती थी और हमेशा ये प्रे करती थी कि जब भी भगवान जी मम्मा को अपने पास बुलाएं, उससे एक दिन पहले मुझे अपने पास बुलाएं. So, those days were very difficult because as a child, you can't imagine your mother, Yes. to be separated from you. So, उसके बाद जब स्कूल में पहली वर्कशॉप हुई, फिफ्थ स्टैंडर्ड आई गेस, फिफ्थ या सिक्स क्लास में पहली वर्कशॉप हुई, एंड देन दे यूज द वर्ड डेट, तब समझ में आया कि ये होता है. अगर उसे पहले ही पता लग जाता तो जो एज अ चाइल्ड, जो मेरी मेंटल हेल्थ थी उस टाइम पे, जो इम्पैक्ट मुझ पे पड़ रहा था एज अ छोटा सा बच्चा, आई कैन नेवर फॉरगेट दिस until I become old. So that thing is still there. And when I think, कभी मैं किसी से शेयर नहीं करती हूँ, तो पर जब भी मैं सोच रही थी आज करने से पहले, I had actually cried, and then I thought नहीं, I should share this so that to tell the audience, to tell the people who are there with us, that it's very very important, right at the very first stage, to talk to the girls, to tell them what exactly this is. हम हमेशा, हमारे साथ प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि हम we always we have this line, no, prevention is better than cure. लेकिन जब तक सर पे डंडा नहीं पड़ता, जब तक हम 11th आवर पे नहीं पहुंच जाते, हम कोई काम नहीं करते हैं. हमने देखा सेकंड वेव में भी यही देखा. फर्स्ट वेव हुआ, सब आराम से बैठे थे कि चलो कोरोना वरोना खत्म हो गया है, मास्क सबके यहाँ पे लटके थे, सब बाजारों में घूम रहे थे. लेकिन जब सेकंड वेव आई, when people started losing their family members, जब वो बोलते हैं ना हमारे सर पर पड़ती है, तब समझ में आता है. So then we do things. But then ये कहावत ही क्यों बनाई है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर? व्हाई हैव वी इवन मेड दिस? हम लोग वेट करते हैं, द गर्ल्स टू हैव देयर हार्ट चेंजिंग, ट्रॉमाटाइजिंग, फेटल पीरियड स्टोरीज. पर हम उन पीरियड स्टोरीज को, जो डरावनी, बिल्कुल घबराहट वाली हो सकती है, हम उनको खूबसूरत भी बना सकते हैं. और उसके लिए हमको क्या करना है?
सिर्फ right age. And what is that right age? When a girl will start menstruating. When does a girl start menstruating? That is at the age of 9 to 16 years. वो कभी भी पीरियड से गुजर सकती है, उसको onset of the periods, you know, that can happen to her Yes. when she is going through a puberty age. तो 9 से 16 साल की उम्र में हम क्यों वेट करते हैं जब उसको पहला पीरियड आ जाएगा? Why can't we tell our girls at the 8, you know, at right at the age of 8, at the age of 9, this is something, a beautiful biological process she will undergo. अब हमारी इतनी टेक्नोलॉजीज है, you know, we have so many games. छोटे छोटे बच्चे 2 साल पता नहीं 3 साल के बच्चे 4 साल के बच्चे, they are playing, लगे हुए हैं टकाटक, right? But then why can't we जब हम चाइल्ड फ्रेंडली गेम्स की बात करते हैं, why can't we create such child friendly, you talk about any games which talks about these things, which talks about periods to them at the very first stage, not waiting कि चीजें जब बिगड़ जाए तब आप उसको बताओ, जब वो उसके साथ कुछ बड़ा हादसा हो जाए तब आप उसको बताओ. You know, something happened with me when we talk about men and periods, yeah. तो हम लोग बोलते हैं कि नहीं, ये तो women का मुद्दा है. बहुत सारे नेम है, जितनी भी वर्कशॉप्स में मैं जाती हूँ सबसे पहले मैं नाम पूछती हूँ कि क्या क्या बोलते हैं महावारी को. देर से आंटी आ गई, यू नो, रेड ब्लड, पता नहीं क्या क्या, महीना, डेट, They महावारी, have these are given the the big code words for names. this. Yeah. This is also a Yes, big taboo in fact, Tanya, कि हम periods को period की तरह refer ही नहीं करते हैं. In fact, we are telling exactly. that at that time of the month or we are down. हम जनरेशन हमारी भी ऐसी हो रखी है ना कि हम भी, it is a long way back. We have been habitual to it. So we have to change this. Yeah. Exactly. I'll come to those taboos parts. तो चम्स हो गए, पता नहीं क्रैम्प्स हो गए, वी से आई एम डाउन, बहुत सारे बहाने बनाते हैं, या सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है, टू टॉक अबाउट पीरियड्स, या. तो अगर हमें कोई ऐसे बोले ए आ ई उ कर कर, यू नो, या हमारे नाम की बजाय हमें कोई किसी और नाम से बुलाए, हाउ वुड वी फील? इट्स एग्जैक्टली विद पीरियड्स. इतने सारे नाम्स, अगेन, you know, that is creating a lot of stereotypes in the minds of the people, yeah. So I was talking about men's and periods. तो हम लोग बोलते हैं ये तो विमेन का ही मुद्दा है, ये तो इट्स अ विमेन्स इश्यू, इट्स अ डिजीज दैट हैपेंस विद ओनली गर्ल्स. सो गर्ल्स को ही बात करनी चाहिए, विमेन को ही बात करनी चाहिए, वी कीप मेन एट स्ट्रे. और आज भी अगर आप पूछोगे तो हम अपने अड़ोसी पड़ोसी या यू नो आवर फ्रेंड, मेल फ्रेंड, हम उनसे भी पूछेंगे तो दे डोंट हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन until, you know, they will, out of curiosity, they will search all the websites, until out of curiosity, you know, वो videos देखेंगे, तब उनको जाकर पता चलेगा. या फिर कुछ मेन को तो, you know, आफ्टर शादी हो जाती तब पता चलता, उससे पहले तो, you know, they Yeah, just obviously. feel that it's a disease क्योंकि कभी बात नहीं की. So, you know what happened with me when I was in class 11th? So I started menstruating, I remember, in class 7th. तो मैं जब 11th में थी, I was just I was always in the good books. मैं हमेशा favorite रहती थी. I was always there in different activities and, you know, everywhere in the school. तो I started menstruating. That was not the exact date जब मुझे आनी चाहिए थी. तो वो अचानक से ही I started menstruating. तो उस टाइम पे I was wearing white dress, like white trousers and green shirt. मेरा house dress था वो. Or that my white trousers, it had blood stain. And I was roaming, मैं कुछ ऐसे ही बाहर, I don't know what, I went out of the class and then I was coming back and then one of my friends told that your whole, there's a big stain on your trousers पीछे से. I was, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं पूरी जगह घूम रही हूँ और मुझे पता नहीं था. And then, you know, it was such an embarrassing moment for me. I sat down. मैं वहीं पर बैठ गई अपनी सीट पर. And you know, one of my drawing teacher, she came. So it was just an adjacent room ही था, drawing room. Sorry, the art and craft room. So she came to me. She said that we're actually planning for some competition, drawing competition. So ma'am came and she said, Tanya, we have to do this. Just come to the drawing room. Not art and craft room actually. So I said, ma'am, I cannot. And she said thrice, you know, and she said, ये इस लड़की को हो क्या गया? Why she is being so disobedient? ये तो कभी ऐसी नहीं थी. And I kept nagging my friend जिसने मुझे बताया था to tell ma'am that I'm going through periods, मैं नहीं उठ सकती हूँ. And you know, she didn't tell, and ma'am scolded and ma'am left the room.
That is, so this is such an embarrassing moment. And then one of my male teacher, so he came and she said, उनको उनको पता चल गया था, शायद ऐसा ही कुछ हुआ होगा इसके साथ, and he asked me कि sanitary napkins कुछ pads वाड्स चाहिए क्या. I was shocked, मैंने तो कभी नहीं सुना था कि मेन और गर्ल्स के साथ ऐसे बात करेंगे, सैनिटरी नैपकिंस. आई वाज वेरी एम्बैरेस्ड टू टॉक टू सर एंड टू लिसन टू हिम. मैं उनसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रही थी एक्चुअली, क्योंकि कभी ऐसा सुना नहीं था कि men can also talk about periods. And I felt कि I felt bad about my teacher as well, कि ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था मुझे. शायद उनकी intentions गलत होंगी, but that was not the case. Yeah, so Yes. men can be a very very strong support. तो हमको क्या करते हैं, जितनी भी वर्कशॉप्स में लेती हूँ, इवन इन द स्कूल, जब हम स्कूल्स को अप्रोच करते हैं, even the government schools, or you talk about the private schools, हमेशा school principals, they're very reluctant. हम बोलते हैं, ma'am, girls and boys, they can sit together in our workshop, it would be very light. And principals would on our face, they would refuse. वो बोलते हैं, अगर आपको girls के साथ session करना है तो you're most welcome, otherwise you're not. तो वहीं से Yes. ही वो चीज शुरू हो जाती है कि नहीं, ये तो विमेन का ही एक मुद्दा है. Okay. महामारी के Yes, ऊपर Anna, it सिर्फ was really good to hear you on this issue. Actually, बहुत से questions आ रहे हैं, so I will start by taking the questions first. Okay. So the first Sure. question of Riya Singh Verma ji, why do we call it menstruation? Yeah. So you talk about menstruation, or I would rather answer this as periods. Periods क्यों बोलते हैं? Aditi, if you would Yes. like to say this. Menstruation, or we say, एक तो, people get confused between mensuration. Mensuration is a mathematics topic, Yeah. but menstruation is what periods is. So periods क्यों बोला जाता है या menstruation क्यों बोला जाता है? Because something that is ongoing, some process that is repeating, right? For example, a cycle that is पहिया चल रहा है, या for example the maths period, it comes again and again. Yeah. So similarly, it's menstruation, it's because it starts at the age of 9 and it continues till 45 or 50 years of age. So that's why it's something which is repeating. वो बार बार आ रहा है, हर महीने आ रहा है, कुछ दिनों तक आ रहा है. That is why we say that it's Yes. periods, I would say. And Exactly. it's Yeah. We should call separated it a period. Yeah. from, yeah. Yeah. Definitely. So the next question is of Shrishti Jetka ji. I feel it's beautiful thought to think how we can equip our little boys and girls about periods, but where I get stuck is on the how part. It's not just about being comfortable talking about it, but I would love to know how we should expose them to this set of changes in body to our children. Right. So the answer to this question is comprehensive sexuality education. It's high time that we incorporate this entire thing into the school curriculum. Starting at the age of 8, say 9, introducing kids, talking about them to their bodies. हम हमेशा बच्चों को कहते हैं, this is your nose. छोटे छोटे बच्चे होते हैं, in first class, in nursery, we tell them, this is your nose, these are your eyes, this is your head. Do we tell them about the name of their private organ? Just a small question I'm asking you people. I'm leaving you to this question. क्या हम उनको उनका private organ का part बताते हैं कि ये आपका vagina है and in boys this is penis. बाकी तो सारे body names हम उनको याद करा देते हैं. This is your nose, this is that. Yeah. But do we tell them about this? I'll share one story separated from periods, but I would still like to share, Yes. everything is so related. So we work on child sexual abuse as well. So there was this case that came up with a little girl. She was raped, she was abused, and she went to the doctor. She kept telling the doctor that she had pain in her stomach. The doctor kept checking her stomach, and she had infection in her vagina. That little girl lost her life just because she could not tell the doctor the name of her private organ. So, Okay. and there are stories. जब मैं अपनी workshops में जाती हूँ, and I talk to these girls, कि आपको पता है कि हम किस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं. सामने लिखा होगा, बैनर पे लिखा होगा माहवारी, periods और तरह तरह, few names which children can recognize with. Still वो उसको पढ़कर भी नहीं वो उसको बोलेंगे, क्योंकि उनको सिखाया ही नहीं गया कि इस मुद्दे पर भी हमें बात करनी है.
हम आलतू फालतू की ये वो सारी कहानियां बोलेंगे, या बट वी विल नॉट कम टू द डायरेक्ट पॉइंट. सो इट्स exactly. इम्पोर्टेंट कि हम किड्स को ना ऐसे या ऐसे छो, बात बराबर है, तो आप सीधी तरीके से क्यों नहीं बता सकते हो. आज भी अगर आप देखोगे 8th क्लास के चैप्टर, देयर इज अ चैप्टर कॉल्ड रिप्रोडक्शन, सबको बहुत एक्साइटमेंट होती है. वी हैव ऑल गॉन थ्रू दिस, नथिंग न्यू फ्रॉम माय साइड. या सो बहुत एक्साइटमेंट होती है, रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे क्योंकि पता नहीं ये आएगा वो आएगा, अबाउट बॉडीज एंड एवरीथिंग. जब वो एक्चुअली वो चैप्टर आता है, teachers, just rush through that. So as an educator, Yes, we have a huge responsibility on our shoulder to tell them at the right age and right thing, directly to the point कि this is happens. So I always talk about, जब भी मैं जाती हूँ, there is always hush hush. वो या तो अपना, अगर विमेन ने दुपट्टा पहना होगा तो वो दुपट्टे को यहाँ तक ले आएंगी, और जैसे ही मैं आऊंगी, जैसे ही टॉपिक शुरू करूंगी, दे स्टार्ट लाफिंग, लुक एट ईच अदर, क्या जिसके ऊपर बात होने वाली है. These are things to shut. Again, two things related to periods. One, it's shame, and another, it's shyness. जिनको बोलते हैं शर्मिंदगी और गंदगी. yes, शर्मिंदगी क्यों है? क्योंकि good. हमने कभी बात नहीं की पुराना, है ना? Yes, so next question I would like to take, Tanya. हम गर्ल्स को पीरियड साइकिल के बारे में किस तरह से ये समझाएं कि वो आफ्टर होगा या बिफोर. ओके, सो पीरियड साइकिल क्या होता है? जब हम महीना बताते हैं बच्चों को, तो महीना क्या होता है? हमें पता है 30 और 31 दिन का होता है, और फरवरी में 28 दिन का होता है. लेकिन जो ये महीना होता है, पीरियड्स होते हैं, वो भी हमारे बाकी महीनों की तरह होता है, लेकिन इसका जो दिन होते हैं वो अलग होते हैं. सो 21 से 35 दिन तक का हमारा पीरियड साइकिल होता है. किसी का 21 दिन हो सकता है, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हम सब यूनिक हैं, हमारी बॉडीज यूनिक है, तो हमारे साइकिल्स भी यूनिक है. तो किसी का महीना 21 दिन का हो सकता है, किसी का 35 दिन का हो सकता है, तो किसी का 40 दिन तक का भी हो सकता है. तो आप बच्चों को बताओ कि आप कैलेंडर लो और पेन लो और मार्क कर दो कि अगर मुझे 1 जनवरी को पीरियड्स आया है और मेरा अगर महीना 21 दिन का है, तो मुझे दोबारा पीरियड्स कब आएंगे? 22 जनवरी को आएंगे. तो आप उसको मार्क कर लो. तो हमारा शुरू शुरू वाला दिन काउंट करते हैं कि कब हमारा शुरू हो रहा है. 1 जनवरी को शुरू हो रहा है, चाहे वो 4 दिन चल रहा है, 5 दिन चल रहा है, फर्क नहीं पड़ता. उसके बाद कब खत्म हो रहा है? अगर मेरा 21 दिन का पीरियड, मुझे पता है कि पीरियड साइकिल है, तो दोबारा मुझे 22 जनवरी को आना चाहिए. और क्यों हमें ऐसे क्यों पता होना चाहिए कि पीरियड साइकिल क्या है? ताकि हम तैयार रहें. ऐसी बहुत सारी, वन गर्ल, शी वाज शेयरिंग विद मी हर एम्बैरेसिंग मोमेंट. शी वाज इन द मार्केट, और उसको पीरियड्स, उसको पता नहीं था कि कैसे मार्क करते हैं कि हर 21 दिन के बाद उसको पीरियड्स आएगा. एंड शी वाज इन द मार्केट एंड शी स्टार्टेड मेंस्ट्रुएटिंग, और वो दाग दाग लग गया, धब्बा लग गया उसकी ड्रेस पर. एंड that moment is a lifetime memory for her. It's a lifetime bad memory for her ki how she has to share, go through that embarrassing moment in front of everybody. Exactly. I can also feel that because the same thing has happened with me also when I was a child. It was my first period, and I also got stained in my skirt. I was returning from the school, and my whole skirt was in red color, and I was traveling in rickshaw at that time. So the whole seat got dirty because of that. So I can feel that thing. It is embarrassing, but at the same time, we have to be open. But at that time, it was really embarrassing for a child. So I can feel that, Tanya. Absolutely. Thank you so much for sharing, Aditi. You people can also share your period stories in the comment chat, in the comment box. Yeah, so I would like to take the next question from Mandy Chabraji. Pain in periods is normal, or there is some hormonal problem because every girl does not face the same pain. In some girls, intensity is very high. Why it is so? Yes. So yes, there is hormonal change going on. बहुत सारी, क्योंकि हमारी बॉडीज यूनिक तरीके से फंक्शन करती है. दिस इज एक्चुअली कॉल्ड प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम. तो हल्का सा पेन, या फिर कुछ पेन, जैसे कि हमारी ब्रेस्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज होना, या थोड़ा सा स्टमक्स में पेन होना, या हमारी मसल्स में पेन होना, टांगों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, सर में दर्द होना, या मूड स्विंग्स. इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. Every girl's more or less goes through it. It's absolutely normal. But then there are hormonal changes certainly that is going on in a girl's body at that time. So there are certain problems as such as PCOS, PCOD,
ये भी होता है. सो दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितना दर्द हो रहा है, क्या बिल्कुल असहनीय दर्द है. You have to consult your gynecologist, you have to consult the doctor without ado. हम क्या करते हैं, another story actually I will share with you. So I was I was in my one of the workshops, और एक बच्ची थी. तो हमारे साथ क्या अक्सर होता है कि women, mothers and daughters, they're together sitting and we're together talking to them. I remember that it was in one of the slum areas. We were organizing this. और जब हम इस पीरियड पेन के बारे में बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ दर्द होता है पीरियड से पहले, one of the girls, she got up and she said कि मैम मुझे बहुत ज्यादा दर्द होता है. और उसकी मम्मी, तो मैंने उनको बोला कि आपको बहुत ज्यादा अगर असहनीय दर्द होता है तो आप मेडिसिन ले सकते हो, आप डॉक्टर के पास जाओ, जो भी मोहल्ला क्लिनिक या नियर बाय आपके एरिया है आप वहां पर जाओ और आप उनसे, डॉक्टर से पूछो तो वो आपको मेडिसिन दे देंगे. एंड दैट मदर, हर मदर, शी गॉट अप एंड शी सेड नहीं, ये मेडिसिन नहीं ले सकती है, आगे प्रेगनेंसी में जाकर प्रॉब्लम हो जाएगा. सो दिस इज अनदर मिथ. चाहे वो मर जाए पेन से, लेकिन वो दवाई नहीं खा सकती क्योंकि लोगों को लगता है आगे प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो जाएगी. अगेन दिस इज अ टैबू इन आवर हार्ट्स एंड इन आवर माइंड्स. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि अगर आपको, और हम अक्सर क्या करती हैं लड़कियां, अगर फैमिली में कुछ हो जाता है, छोटे बच्चे को कुछ हो जाएगा, हस्बैंड को कुछ हो जाएगा, ब्रदर को कुछ हो जाएगा, या डॉटर, सन को कुछ हो जाएगा, we will first, she'll be the first one who will rush them to the doctor. But जब उसकी खुद की बात आती है, she'll be the last one. तो दर्द सह लेगी, कुछ भी कर लेगी, लेकिन डॉक्टर के पास नहीं जाएगी जबकि जरूरत होती है. So this is also, we also talk about self care. It's so important. अगर आपको कुछ हो जाता है तो आप फैमिली का केयर भी कैसे कर पाओगे? Exactly. Exactly, Tanya. I think you are correct. We have to take care of ourselves first. बिना सोचे समझे कि भाई दवाइयाँ जो होती हैं आगे फ्यूचर में क्या असर करेंगी नहीं करेंगी, बिकॉज पहले तो प्रेजेंट है ना अपना, पहले तो अपनी केयर करनी है प्रेजेंट में. ओके, so I would like to take the another question, Tanya. It is from Sia Gupta ji. Do you think period tracking apps are important for awareness? You're talking about period apps? Period tracking apps. Yes, see, whatever, एक कॉम्प्रिहेंसिव वर्कशॉप अगर आपके साथ हुआ, इट्स गुड टू कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन, बट देन यू ऑल्सो नीड टू चेक द रिसोर्सेस. ऐसा नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहा है और आप उसको मान रहे हो. So just go through the verified resources. Talk about the doctors, you can go to the organizations who've been working on these issues. Talk about the doctors' advice, not just gathering information from anywhere and everywhere, but just checking the resources, I would say. Okay. Okay. So Tanya, it is a question from Prashi Sharma ji. As you told that many people in our society doesn't refer periods or menstruation with the specific names. So how can we tell them change their mindset that this is a normal thing and should not be ashamed of speaking about this? Yes, actually it's a very broad question क्योंकि इतने सारे टैबूज हैं, है ना. तो अब डायरेक्टली जब हम अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं, इफ माय नेम इज तान्या, मैं अपने आप को किसी और के नाम से इंट्रोड्यूस नहीं करूंगी, मैं डायरेक्ट बोलूंगी कि मेरा नाम तान्या है. या सो सिमिलरली विद द पीरियड्स, जब आप यू स्टार्ट स्मॉल, या तो आप किसी संस्था के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं, या अपने आप भी जहां पे भी आप हैं, यू आर अ स्कूल स्टूडेंट, नो मैटर, या फिर अपने घर में भी यू आर एजुकेटिंग योर सिबलिंग अबाउट इट, talking to periods about the men in your house, about the with your brother in your house, that is also workable. What we have to do is we have to, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि स्टीरियोटाइप्स कैसे ब्रेक करें, क्योंकि ये ना एक बेबुनियाद धारणाएं हैं जो सदियों से चली आ रही है. तो उसको एकदम से हम ऐसे हथौड़ा लेकर नहीं ब्रेक कर सकते, ईट की तरह, बर्फ की तरह नहीं ब्रेक कर सकते. दिस इज समथिंग टू बी टू इंटरनलाइज. तो वो हम कैसे कर सकते हैं? बाय टॉकिंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम विद द राइट पर्सन. या से फॉर एग्जाम्पल, जब भी मैं अपनी वर्कशॉप में जाती हूँ, मैं उनसे पूछती हूँ क्या क्या धारणाएं हैं, तो वो सब अपने आप खुद ही बताती हैं. जो लेडीज है खुद ही, कभी यहाँ से पॉपअप होता है, कोई यहाँ से बोल रहा होता है कि किचन में नहीं जाने देते, मंदिर में नहीं जाने देते, मस्जिद में नहीं जाने देते. अगर एक गर्ल है, शी इज मेंस्ट्रुएटिंग फॉर 4 days, तो रिलीजन हैज अ वेरी बिग इम्पैक्ट. तो अगर 4 days 5 days वो मेंस्ट्रुएट कर रही है तो उसको नहाने तक नहीं देंगे.
या सो व्हाट डू यू डू? यू आस्क द राइट क्वेश्चंस. क्यों आप राइट क्वेश्चन? जस्ट टू गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. तो अभी हमें बोला जाता है, अगर हम बात करते हैं कि मंदिर जाना नहीं नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, हम भगवान जी के साथ क्या रिश्ता रखते हैं? हम उनको अपना पेरेंट मानते हैं, हाँ, अपना सबसे बढ़िया दोस्त मानते हैं. तो जब हम माहवारी से होते हैं, क्या हम अपने दोस्त को कहते हैं तू मुझसे 10 फीट दूर रहे, 5 फीट दूर रहे, मैं माहवारी से हूँ, मैं पीरियड से हूँ? नहीं. हम अपने पेरेंट्स को ये कहते हैं कि हमारे पास मत आओ, हमें खाना दूसरे रूम में दो? नहीं, हम नहीं कहते. हम उनको हक कर लेते हैं. मैं तो अपनी मम्मी को जब तक दिन में 50 बारी हक ना कर लूं, मेरा तो दिन ही नहीं जाता. सो यू नो व्हाट वी डू. तो भगवान जी के साथ कैसा रिश्ता है हमारा, पेरेंट्स का, फ्रेंड का? तो हम उनको क्यों अलग मानते हैं? क्यों हम बोलते हैं कि ग्रंथ नहीं छूना, मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना? तो आस्क द राइट क्वेश्चंस. आपकी अगर मम्मी आपको मना कर रही है, आपकी दादी आपको मना कर रही है, तो उनसे पूछो भाई क्यों. अगर आपको आपका सही जवाब मिल जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो यू हैव टू स्टॉप. I think they also don't know the right answer. तभी वो मना करते हैं हमको. एग्जैक्टली. No तो one knows आपके पास that. आंसर नहीं है तो आप ढूंढो उसको. यू नो हैव दैट Exactly. सीकिंग स्पिरिट इन योर माइंड. अब हम बात करते हैं खून का. क्यों हम बोलते हैं मंदिर नहीं जाना, मस्जिद नहीं जाना, अचार नहीं छूना, तुलसी नहीं छूनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना? क्यों? क्योंकि सब मानते हैं गंदा खून है. अरे भाई, अगर मुझे हाथ पे चोट लग जाए और मैं उसको चाकू से हाथ पे चोट लग जाए या कुछ भी हो, किसी ने हल्का सा कट लग गया, कुछ भी, खून आ रहा है, तो वो खून, आस्क द राइट क्वेश्चन. क्या वो खून मेरी बॉडी में, मेरी क्या बॉडी दो तरीके की है कि अच्छा लोअर पोर्शन अलग है, अपर पोर्शन अलग है, अपर में अलग सा खून बहता है, लोअर में अलग सा खून बहता है? सो यू आस्क द राइट क्वेश्चन. वजाइना से जो खून बह रहा है वही तो आपका बाकी बॉडी में ब्लड फ्लो कर रहा है. Yes, सो Tanya. So फिर क्यों बोल रहे हैं yeah, गंदा खून है? it is right, Tanya. I think that you are really speaking the right thing. And I would like to take the next question, Tanya, from Ishan Malraji. One way or the other, girls get to know about menstruation either by themselves or through the elder ladies in the families. But how can we bring boys into light about this at the right point of time? Again, starting from education, starting from the school children itself. So wo parent, it is very very high time that this has to be included in a curriculum. अब जब curriculum होगा तो boys girls को अलग से बिठाकर नहीं बताएंगे, इसको इकट्ठे ही बताकर बिठाएंगे. And then you people, आप एक छोटा सा initiative, so many things are, so many ideas out there. आप छोटी सी चीज कर सकते हो, आप अपने टीचर को जाकर बोल सकते हो. You ask the teacher what is exactly this about. You initiate a conversation between your friends. आप ऐसे safe spaces अपने स्कूल में हो या in your organization you can talk about that. So ask ask the right questions, I would say. And it's high time that different stakeholders, especially the government, especially the educators, everybody needs to come together to talk about this. अब हमने पैंडेमिक देखा, सारे दुनिया की नजर इस पर है, राइट? सब everybody talking about pandemic everywhere, G7, talking about countries, सब इकट्ठे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं, brainstorming की क्या solutions है, वैक्सीन कैसे बनानी है, नॉन. But menstrual hygiene is the fifth biggest reason behind the death of women each year. There are millions of girls who are dropped out of the school just because they start menstruating. There are millions of girls who, जिनकी जल्दी शादी की कर दिया जाता है क्योंकि उनको puberty, because they've started menstruating. So why can't we all come together and talk about this as well? क्यों हम उस लास्ट मोमेंट का वेट करते हैं या हम वेट ही नहीं करते हैं? टॉक अबाउट वर्ल्ड मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे. क्यों ये 2014 में ही शुरू हुआ? व्हाई? मेंस्ट्रुएशन तो जब से ये पूरी संसार है तब से ही चला आ रहा है. हमें 2014 का ही क्यों वेट करना चाहिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे Lack of सेलिब्रेट awareness, I think, Tanya. करने? यस. Okay. So I would like to take the next question, Tanya, of Kunjana Chawla जी. कभी कभी पेट में दर्द के साथ वॉमिटिंग भी होती है, ऐसा क्यों होता है? See, it's actually normal. See, there are a lot of cramps, period cramps going on. हाँ, तो ये चीजें नॉर्मल है. वॉमिटिंग आना या पेट दर्द होना, आई वुड से इट्स normal actually, क्योंकि बॉडी में there are hormonal changes going on, there's something happening inside your body. Yeah, but then again बहुत ज्यादा excessive हो रहा है, असहनीय हो रहा है, then you rush to the doctor and take the medicine and you will be absolutely fine. या फॉर एग्जाम्पल टॉकिंग अबाउट पीरियड क्राम्प्स, क्यों होता है वो? जब आप टूथपेस्ट लेते हो तो आप उसको हल्का सा ट्यूब को प्रेस करते हो तभी पेस्ट निकलता है ना. सिमिलरली दैट इज विद आवर बॉडी ऑल्सो.
सो मसल्स जो होता है वो सिकुड़ती हैं ताकि ब्लड और वाइट डिस्चार्ज जो झिल्ली बन जाती है, परत बन जाती है, वो बाहर आ सके। तो उसके लिए मांसपेशियों को सिकुड़ना थोड़ा सा पड़ता है, दैट इज वाई वी सफर क्रैम्प्स। और बाकी जो भी चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, सो आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट देन एक्सेसिव है तो रश टू द डॉक्टर। Yes, exactly, Tanya. I will also like to connect my one of the question with one of the question over here of Suhani Gupta ji. She's saying, in my school, they used to charge for the pads if we needed. Don't you think it should be given free of cost in case of emergencies? I also had the same question, Tanya, in my mind that the girls who are not able to even afford the sanitary napkins, those are not even having the soap and water to wash their hands. So how can we provide them all the basic amenities and उन सबके क्या experiences होते होंगे? I would like to know their stories also, Tanya, from you. यस, सी अभी क्या हो रहा है, गवर्नमेंट का लॉट ऑफ पीपल दे आर नॉट अवेयर अबाउट कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स, दीज पीरियड प्रोडक्ट्स होते ही क्या है। देर आर पीपल हु डू नॉट, देर आर विमेन हु डू नॉट इवन वेयर पैंटीज, forget about the period products that they will have. So you know, there are jan suvidha kendra. You are absolutely right, this is something, it's an essential commodity which we need to have, which the girls need to have, and that should be provided for free. But then, you know, there is something deep within the stakeholders that needs to be changed. Yeah. I have gone into, you know, to take these workshops in various government schools. वहां की हालत क्या है, वहां पर या स्लम एरियाज की जाओ आप, शौचालय देख लो वहां के, व्हाट इज द केस वहां पर, इट्स लाइक स्टिंकिंग। क्या होता है, मतलब जगह ही नहीं है प्रोडक्ट्स, लाइक यू नो, टू चेंज द सैनिटरी नैपकिंस। या, सो इट्स इम्पोर्टेंट, लाइक अगेन आई वुड से कि something deep that needs to be changed कि ये एक essential commodity बन जाए, and you know, everybody's provided free access. I'll talk about one thing, I'll talk about one incident, actually one story. So last year on 28th May, World Menstrual Hygiene Day, Womenite, you know, we went into 21 villages back to back. उस टाइम पे लॉकडाउन था, हम बैक टू बैक 21 विलेजेस में गए थे एज अ पार्ट ऑफ अ रिलीफ वर्क टू डिस्ट्रीब्यूट सैनिटरी नैपकिंस। अब है तो क्या, सैनिटरी नैपकिंस बहुत बेसिक सी चीज है, उस टाइम पे तो लोगों के पास खाना तक नहीं था। बट इन 21 villages, each village we stepped our foot into, there were, you know, hundreds and hundreds of women. जो कम्युनिटी लीडर्स हमने आइडेंटिफाई किए थे, उनके एक आवाज पे hundreds and hundreds of women gathered। यानी कि कितना नीड है इसका, राइट? खाना होता तो समझ में आता है कि लोग टूट पड़ रहे हैं, यू नो, बिकॉज देयर इज डायर नीड। बट व्हाट अबाउट द सैनिटरी प्रोडक्ट, उसका कितना नीड था, that people umar ghumar kar, you know, people were coming from everywhere to get those few sanitary napkins to manage their period products. या, और अभी तो बहुत सारे मशीन्स भी लगी हुई हैं काफी सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में, यू पुट अ कॉइन एंड यू गेट इट। देयर आर जन सुविधा केंद्र जहां पर आपको 4 रुपए का पैड मिलता है, यानी कि एक पैकेट मिलता है जिसमें 4 पैड्स होते हैं। विमेन आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। मैं उनसे पूछ रही हूँ आपको जन सुविधा केंद्र के बारे में पता है वो क्या होता है? तो आप विस्पर, यू टॉक अबाउट दीज ब्रांड्स इतने कॉस्टली होते हैं, फॉरगेट अबाउट कि वो लोग उसको लेकर जाएंगे, उसको लेने के लिए खरीदेंगे उसको। और वो जन सुविधा केंद्र जो गवर्नमेंट आपको सब्सिडाइज रेट्स पे प्रोवाइड कर रही है, पीपल आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू एजुकेट देम कि अगर आप इतना महंगा नहीं प्रोडक्ट परचेज कर सकते हो तो गो अबाउट दीज सैनिटरी प्रोडक्ट्स जो गवर्नमेंट ऑलरेडी सब्सिडाइज रेट्स पे प्रोवाइड कर रही है। Yes, exactly, Tanya. Yes. I think that the government should also do a bit with them to provide the sanitary napkins free of cost also. And आपने सही का marginalized price होना चाहिए एक sanitary napkins का भी, ताकि सब afford कर सके इसको. Absolutely. And yeah, next question we would like to take for Ishika Pundeji. There must be times when you must be in a session and seeing someone or hearing a story, you must have felt inspired, and that particular incident must have changed your mindsets about a certain thing, and you must have felt happy about it. Can you please share such a story, one particular incident that you are very proud of or you want everyone to know? Yes, I think one of the stories of a little girl, you know, why I was in one of the villages and was talking, तो वहाँ पे mothers बैठी थी और वहाँ पर you know, there was this what do we say, छोटे छोटे बच्चे बैठे थे, like the girls and the women they were sitting, और पीछे you know they were these men जो village headmen थे, कुछ कुछ लोग वहां पर बैठे थे।
एंड इंटायर सेशन में तो माइक पे बोल रही थी, बिकॉज जब हम गवर्नमेंट प्रोग्राम्स में जाते हैं तो दे हैव ये पूरा प्रॉपर सिस्टम होता है माइक वाइक का, एंड देयर आर पीपल, बहुत लार्ज गैदरिंग था, एंड देयर वाज दिस ग्रुप ऑफ मेन हु वर सिटिंग देयर. तो क्या हुआ, जब हमारी वर्कशॉप एंड हो गई, वी ऑलवेज नो मैटर हमारा रिलीव like hashtag end period poverty campaign जो था उसमें, तो we just went to give the as a part of relief work we were distributing sanitary napkins, but we distributed in every workshop only to give them an incentive. तो हमेशा क्या होता है, हमेशा मेरे साथ हर भी वर्कशॉप में, जिस भी वर्कशॉप में जाती हूँ, तो मदर्स कलेक्ट करती है डॉटर्स के बिहाफ पे कि मैम हमारी डॉटर है जो आज नहीं आ सकी, आज आप उनको दे दो, मैम ये है वो नहीं आ सकी, उनको दे दो. But this group of men, they came to me and they asked for sanitary napkins for their daughters. I was so proud, so proud, of these men. Kabhi aisa nahi hua, so many thousands and thousands of women I have taken workshop with. हमेशा वो लोग ही लेने आते थे sanitary napkins. But these men, that was a small change. And people, women भी वहां पर खड़ी थी और girls, daughters भी वहां पर खड़ी थी to see them कि they have asked for sanitary napkins for their daughters as well. So it's nothing to feel ashamed about. And yeah. Yeah, it is actually a beautiful story, Tanya. Men are also changing their mentality and coming forward to take pads. It is really a big change. Thanks for telling us the story. So next question I would like to take of Danshu Singh ji. Thousands of young girls suffer every day and they crumble in silence with no one listening because they are being trained to not ask for it. What do you think should Indian men do to help girls battle with this? Yeah, not see. When I told you about my own story, जो मेरे साथ 11th क्लास में हुआ, मैं क्यों सीट से उठ नहीं पाई थी, क्योंकि मुझे डर था कि बॉयज देख लेंगे क्लास में, शायद उन्होंने पहले देख ही लिया होगा, but then that thing was something which will stay with me forever. Yeah. So men can be a very very good great support system to women. आप उसको कैसे सपोर्ट सिस्टम बन सकते हो, जस्ट टू नॉर्मलाइजिंग इट. चाहे विमेन जब हम कुछ खा रहे होते हैं, मार्केट में गोलगप्पे खा रहे हैं या कोई टिक्की चाट खा रहे हैं और यहाँ पर स्टेन लग जाता है, शर्ट पे कुछ गिर जाता है, तो क्या हम इतना हवा बना देते हैं उसका? नहीं. क्या स्टेन, अगर विमेन की अगर स्कर्ट पे स्टेन लग जाता है तो पता नहीं कितना बड़ा ऐसे हो जाता है, क्या ही हो गया हो, राइट? सो हाउ कैन मेन प्ले अ पार्ट टू नॉर्मलाइजिंग इट, कि अगर आपकी फीमेल फ्रेंड को अगर कुछ स्टेन लग भी गया है, यू आर लेंडिंग अ हेल्पिंग हैंड टू हर. यू आर, अगर वो रश नहीं कर सकती सैनिटरी नैपकिन के लिए, यू आर आस्किंग द फ्रेंड्स टू प्रोवाइड हर द सैनिटरी नैपकिन, और जस्ट बीइंग द सपोर्ट सिस्टम. वी टॉक अबाउट मूड स्विंग्स, बहुत सारा मूड स्विंग्स होता है, ऐसे होता है बहुत बारी, कई बार बहुत गुस्सा आ रहा है कि किसी को पीट दे सामने आया, या फिर बहुत सारे इमोशंस हो रहे होते हैं उस टाइम पे, ऑलरेडी इतना पेन हो रहा होता है, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इमोशनल चेंजेस गोइंग ऑन. So you can just be there. Your presence can be everything to her. And of course, talk about periods to your sisters, I would say. And men in the house, talk about periods to your daughters. आप women की क्यों, मदर की क्यों वेट करते हो? आप ही क्यों नहीं उसको सबसे पहले बताते हो कि बच्चे ये सब होगा तेरे साथ, एंड यू तो तैयार रही हो. हम किसी जंग पे जाते हैं, हम निहत्ते थोड़ा ना जाते हैं. वी गो विद द आर्म्स, वी गो विद द वेपन्स. या सो जो पीरियड्स होगा, जब उसको फर्स्ट पीरियड होगा, उसको बहुत ब्यूटीफुल उसकी स्टोरी क्रिएट करने के लिए, लेट्स प्रिपेयर हर इन एडवांस. एंड दैट इज नॉट नेसेसरी कि मदर ही डॉटर को बताएगी. It could also be the men who can initiate the conversation. Sure, Tanya, it is really beautiful when men will take initiative to do such things for daughters and for wives and for mothers too. So the next question I would like to take of Nisha Haryani ji. मैम ऐसा क्यों बोला जाता है कि you can only enter a place of prayer once you have washed your hairs or on after the fourth day? It is also basically a taboo she's asking It's about. taboo. Yeah. सी, जब हम हाइजीन के बारे में बात करते हैं, एक तो हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा गंदगी है, खून गंदा है, ये वो गंदा है, तो खून गंदा है तो क्या, नहाओ, मेंटेन हाइजीन. और दूसरी तरफ हम यू सी द डायकोटमी, यू सी द कॉन्ट्रडिक्शन इन द थॉट. उसके बाद हम बोलते हैं कि नहाओ मत, सर मत धो. एक तरफ हम बोल रहे हैं कि गंदगी है, चलो मान लिया, आपकी बात भी मान ली, गंदा खून है, ये है, गंदी बॉडी है, स्टफ. तो मतलब अगर ठीक है भाई, गंदा है तो मुझे नहाना चाहिए ना, बट फिर आप बोल रहे हो नहाओ भी मत, तो करे तो क्या करे?
So it's like it's a taboo. When we don't ask logical questions, how will we get the logical answers? एग्जैक्टली ताना, आई थिंक दैट इट इज रियली अ बिग थिंग दैट ये टैबूज जो हैं बहुत ज़्यादा हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं. बट हाउ कैन वी जस्ट इराडिकेट ऑल दिस टैबूज? हम क्या कर सकते हैं इनको कम्बैट करने के लिए? मतलब आप बताइए, जैसे कि आपके पास वेज हो तो हम इंडिविजुअल लेवल पे भी कुछ कर सकते हैं क्या ऐसा, देखो, दैट वी कैन मैं तो इराडिकेट क्या? यस, मैं हर वर्कशॉप में बोलती हूँ. तो बच्चे मुझसे बोलते हैं, मम्मी अचार नहीं छूने देती मैम, मम्मी तुलसी नहीं छूने देती, दादी मना करती है मुझे. एंड आई आस्क देम कि आपने कभी छू के देखा है? दे विल से नो. आई से ओके, लेट्स डू अ डेमो. हम क्या करेंगे, आज घर जाएंगे, एक कटोरी में अचार लेंगे. जब हम पीरियड से होंगे, हम उस अचार को छुएंगे और देखेंगे कि क्या वो गंदा हुआ कि नहीं. हम तुलसी को क्या करेंगे, तुलसी के छोटे से जगह को हम उसको जाकर छुएंगे और देखेंगे कि पौधा मुरझाया कि नहीं. तो जब तक हम उसको खुद नहीं कर लेते, जब तक हम अपनी दादी, अपनी मम्मी, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, पर दादी ने दादी, दादी ने मम्मी को, मम्मी ने डॉटर को, डॉटर आगे, तो हमें तो कहीं तो रुकना ही होगा. इस ट्रेन को कहीं तो उसका स्टेशन होगा उसका कहीं. तो कैसे होगा वो? जब हम बात करेंगे, जब हम लॉजिकल क्वेश्चंस पूछेंगे, और कोई मुझे नहीं लगता कोई तरीका है. वी स्टार्ट एजुकेटिंग गर्ल्स, बॉयज, इनफैक्ट पीपल फ्रॉम LGBTQI प्लस कम्युनिटी एट द वेरी राइट एज. क्यों इन लोगों को? अब एक छोटी सी बात बताओ, दिस ट्रांस वुमेन, क्यों उन लोगों के लिए इतना मुश्किल होता है बाहर आना? क्योंकि वो सिर्फ मेंस्ट्रुएट नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, क्योंकि वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, सिर्फ इसीलिए हम उनकी इतनी जो हार्ट रेंचिंग स्टोरीज होती है, इतना जो टैबू क्रिएट किया गया है कि ये लोग इस कम्युनिटी के लोगों को स्पेशली इतना मुश्किल होता है इनकी ट्रू आइडेंटिटी बाहर निकालना, just because they cannot menstruate, just because they can't become pregnant. Again, a taboo, right? So many taboos associated with it. So I'll share a story. So in Kenya, what happens? Kenya में क्या होता है, जब भी women का like the girl starts menstruating, उसको बहुत अच्छी तरीके से, it's in a good sense, कि उसको अच्छी तरीके से बहुत ऐसे पूजा जाता है, like people give, एक wedding की तरह होता है, and सब लोग आते हैं, उसको बहुत सारे gifts देते हैं, celebrated there. So why can't we celebrate here? जब लड़की पैदा होती है तभी हम रोना शुरू हो जाते हैं. Why can't we celebrate things? इट इज हाई टाइम टू चेंज अ मेंटालिटी तान्या, सीरियसली. बिकॉज हम इतने एजुकेटेड होके वो नहीं करते, बट लोग बाहर तो होते हैं. उड़ीसा वगैरह का भी मुझे सीन सुना था ऐसे ही, जैसे आप बता रहे हैं केन्या का. तो व्हाई कांट वी आल्सो अडॉप्ट सच थिंग्स? इट इज हाई Right. टाइम. सो Absolutely. नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड लाइक टू टेक तान्या. वंदना पराशर गुप्ता जी का क्वेश्चन है ये. डज menstruation really limit women of what women can do, like their office work or any other studies, etc.? What do you think? Is it? Absolutely not. There are people, हमारी इंडिया में you see so many examples. हमारी INS तारिणी है. तारिणी, you must have heard about. वो पूरे वर्ल्ड का एक्सपेडिशन पे गई थी. The group of 5 women, they went and they circumnavigated the whole world. That was the first in the world. They are also women, right? वो अपने छोटी सी शिप में, तारिणी जिसको बोलते हैं, पूरे उस छोटे से शिप में पता नहीं कितने बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हुए वो लोग गए थे. वो भी तो women है. There are women, mountain climbers. Arunima Sinha, she is also a woman. When she can do things, why can't we? Do you really think Yes, exactly. menstruation is a beautiful, beautiful, biological process? We know that it's a vardhan. Yeah. Because of you and me, we are existing. We are here on the Facebook Live, talking to each other, asking questions, responding. अगर ये biological process ही नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा, right? So it's a simple thing. Okay. Yes, one of the more question, Jyotsna Chetri is asking, what are your views on that every person should be aware of what menstrual cycle is, and it has been shown as a dirty thing in India and in some areas. And she's also, yeah, this is the question. See, every person, the last man, the last woman, the last person from the LGBTQIA plus community should be aware about this beautiful biological process. क्योंकि ये सबको, this happens. The world is existing because of this. Everybody needs to be educated. Again, going back, talk about education, starting from the right age.
उसको शुरू होने से पहले ही आप उसके बारे में बात करो, आप उसके बारे में घर पर बात करो. That is the only way. And when you have the proper knowledge, you talk about to it in your friend circle. हम इतनी गुपचुप करते हैं, बातें करते हैं, why can't we talk about periods? चलो आज फ्रेंड्स मिलकर सिर्फ periods के ऊपर बात कर रहे हैं. Be it male, female, whatsoever, no matter what gender, creed, caste, sex or whatsoever. Yeah. So these small conversations will be really helpful to break those taboos and asking the right questions. Very important. Yes, absolutely, Tanya. I think that you have really opened our minds, and ये काफी informative session रहा आपके साथ. Thank you so much for giving us such a great knowledge for everything and stories जो आपने share करी. That was really wonderful. Thank you so much, Tanya. Thank you so And much. yes, so I would like to ask you, Tanya, कि आपको इन questions में से सबसे अच्छा questions कौन सा लगा? मतलब what according to you was the best question I this think time? one with the Yeah. okay. So actually, each question was very relevant and very important to ask, and would really thank each and every person who has been really active in our chat box and our comment box. But one, was there which asked about the men and periods. I don't know exactly remember that. Who was that person? Uh, Okay. Let me there was see. something to educate, boy, something to educate. There was something related to men and periods, I think. Yes, I let me find the question. I think it's Ishan. How can we bring boys? Did you Yeah, find it's it? I think I think it's Ishant Malraji. Yeah. Yes, I guess because it's very important, to bring men into the picture. क्योंकि आधी कहानी तो वहीं खत्म हो जाएगी. जितने भी टैबूज है, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये गर्ल्स का मुद्दा है, इसीलिए जितने भी स्टीरियोटाइप्स, जितने भी टैबूज है. एंड इफ मेन, जब एक गर्ल को एक मदर बोल रही है कि अपनी डॉटर को बोल रही है कि तुम्हें यहाँ नहीं जाना, एंड ब्रदर स्टेपिंग इन बिटवीन एंड सेइंग कि क्यों नहीं जा सकती वो, द फादर आस्किंग कि क्यों नहीं जा सकती वो मंदिर या मस्जिद, क्यों नहीं छू सकती. आई थिंक दैट विल बी द मोमेंट दैट विल क्रिएट चेंज. Exactly. So I proudly announce Ishan Malraji as the winner of our best question, as suggested by Mr. Tanya Gupta. And now it's time for our Mr. India to tell that who has given the best comment. Okay, so the winner is Sid Nagma SGG. Uh, so I proudly announce him as the winner of our best commenter. Tanya, it was a great session with you, and it was great to have you on the show. Thank you so much. I hope that हमारे audience को हमारा show अच्छा लगा. आपसे बात करके बहुत खुशी हुई. And I would like to give Thanksgiving, and also it's time to end the show. And stay safe, stay happy, and also please follow the social distancing precautions. And also please go and vaccinate yourself and your family. Thank you so much. Thank you so much, Thank Tanya. you so much. Goodbye. Good day. Stay safe. Bye. Stay healthy. Thank you. Thank you.